हम ट्रेडिंग अकाउंट देखिदेले अब आम कौन करिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमर सेकंड स्टेप थिला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट केमती बनैबा फर्स्ट हम ट्रेडिंग अकाउंट सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस थर्ड हमर बैलेंस शीट थिला हमें सेकंड स्टेप को बुझिबा ओके तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट केमती बनाउची सेटा देखिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एथरे हम कोन जानि परबा हमर नेट प्रॉफिट है कि नेट लॉस है जानि परबा देखो हमें जते प्रोडक्टिविटी कले परचेज और सेल ट्रेडिंग अकाउंट को कले हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस से आसबो ये सब हमें डेबिट कर ग्रॉस प्रॉफिट हमें बाहर कले तापरे नेक्स्ट स्टेप है हम जहाँ भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कि सेल रिलेटेड जहाँ भी खर्च होइछि सैलरी दिया होछि कि हम जो एसेट को डेप्रिसिएट करबा तार सब एक्सपेंसेस रो लिस्ट को रखिबा प्रॉफिट एंड लॉस में ताको डेबिट करबा ओके प्रॉफिट एंड लॉस रो में कोन अरेव करबा whether we have net profit or net loss I mean net profit है कि net loss है कि हम एटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट बनाला पर ही जान परबा देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कोन कहूची तार मीनिंग कोन देखिबा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट profit and loss account is the second part of the trading and profit and loss account first step रे हम कोन कले trading account बनेले एबे सेकंड रे कोन करबा profit and loss account बनेबा so the purpose of preparing profit and loss account is to find out the net profit or net loss of a business during a year हम गोटे अकाउंटिंग पीरियड भितर हम whether हम net profit है net loss है जेटा जाने पे हम profit and loss account बनौचे तापर आसिला excess of gross profit plus other income over total indirect expenses and losses represents net profit okay excess of gross profit हम जहाँ भी gross profit है जी और जहाँ इनकम अदर इनकम जहाँ भी है कमीशन रिसीव हो पारे कि इंटरेस्ट इनकम जहाँ भी है कि इन्वेस्टर करछे खर्च करछे तादर भी इंटरेस्ट आसुची कि शेयर किनछे डिविडेंड एक हमरो आसुची तो से सब हम ग्रॉस प्रॉफिट रे मिसिबो हम जति ग्रॉस प्रॉफिट करथिले सेथिरु हम जहाँ भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अछि ओके सेल्स रिलेटेड जहाँ भी एक्सपेंसेस के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जहाँ भी अछि ताको हम सब माइनस कला परे जहाँ भी नेट हमर जहाँ भी हमें जति की बाहरिबो सेटा हमर नेट प्रॉफिट ओके जहाँ सब लिखाला excess of gross profit plus other income मिसेले over total indirect expenses and losses से सब जहाँ मोर जो इनकम हैला तादरो हमें indirect expenses और losses को माइनस कला पर जहाँ आसीबा हमर नेट प्रॉफिट in the reverse case net loss will arise जदि हमर एटी ग्रॉस प्रॉफिट अछि बोली हम इनकम मिसे देले जदि ग्रॉस लॉस थाता तो ग्रॉस लॉस जहाँ भी सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अछि सेतु माइनस करथांते कोन हमर इनडायरेक्ट इनकम माने अदर इनकम जहाँ अछि जदि माइनस कला पर हम कोन पहुंचते नेट लॉस ओके एमती नेट प्रॉफिट बाहर करबा एमती तार वाइस वर्सा नेट लॉस भी बाहर कर परबा तापर आसला प्रोसीजर टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट goes preparation preparation of profit and loss account is very simple okay first aslo kono the gross profit or gross loss is brought from the trading account jodi gross profit हेतिबो कि gross loss हेतिबो जहाँ भी गोटे हबो ताको में ब्रॉड करिया ट्रेडिंग रु ट्रांसफर करिया प्रॉफिट एंड लॉस को ओके जदि हमर लेफ्ट पटे राइट डेबिट पटे रहला ग्रॉस प्रॉफिट तो बैलेंस जे प्रॉफिट एंड लॉस को अकाउंट को आनिबा हम क्रेडिट को आनि दबा बाय ग्रॉस प्रॉफिट करकी केमती ग्रॉस लॉस हेची तमे प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करके आनिबा तो कोन लिखबे टू ग्रॉस लॉस ओके तापर असला ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस नॉट टेकन टू ट्रेडिंग अकाउंट जो सब एक्सपेंसेस अछि जहा ट्रेडिंग अकाउंट में शो करने ओके ट्रेडिंग अकाउंट में सही सब एक्सपेंसेस शो करथिला जो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जहां भी अछि सब हम कोथरे शो करबा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस नॉट टेकन टू ट्रेडिंग अकाउंट आर शोन इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओके डेबिट साइड रो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रे सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखैबा जो सब के ट्रेडिंग अकाउंट रे हमें शो करने तापर असला ऑल इनकम एंड गेन्स आर शोन इन द क्रेडिट साइड ओके आ अदर इनकम जहां अछि ताको हमें indirect income कोथरे शो करिया क्रेडिट साइड रे शो करिया तबरे if the credit side is more than the debit side देखा आमे तो ट्रेडिंग अकाउंट करथिले तार क्रेडिट साइड अधिक होला आ डेबिट साइड कम होला तो हमर ग्रॉस प्रॉफिट भाला
एटी जस्ट सेमती क्रेडिट साइड अधिक हम डेबिट साइड टू आम कौन बाहर करबा हम नेट प्रॉफिट बाहर जमती रिवर्स रे जदी डेबिट साइड अधिक होला क्रेडिट साइड कम होला तो हम नेट लॉस बाहर ओके तापर आसिला फीचर्स ओके फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन कहूची profit and loss account has the following silent features first आसिला it is a nominal account कौन भाई এটা রেভিনিউ নেচরে যাহা বি সব আমার এক্সপেন্সেস ও ইনকম হতুয়া সে সব রেকর্ড করা হচ্ছে আমি নমিনাল আকাউন্ট কম পড়ଥିଲି অল ইনকম এক্সপেন্সেস আউ গেন আউ যাহা আমার এক্সপেন্ডিচর ଅଛି ସବୁ আমি কোথ রেকর্ড করଥିଲି নমিনাল আকাউন্ট রে তো সেমতি এটা ଗୋଟେ নমিনাল আকাউন্ট তারপরে ইট accommodates only revenue item and do not contain any capital item ଯାହା ବି ରେଭିନ୍ୟୁ ନେଚର ଯୋଉ ଯାହା ରହିଥିବ ଆମେ ତାକୁ केवल रेवेन्यू नेचर आइटम गुड एथरे हमें इंक्लूड करिया कैपिटल नेचर जोटा सेटा हमें इंक्लूड करिया नहीं सेटा हमें बैलेंस शीट देखिबा तब आसला ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू द करंट ईयर ओनली विथ द पेड और आउटस्टैंडिंग आर टेकन टू द क्रेडिट साइड ओके जहां भी आउटस्टैंडिंग थिबो कि एई वर्षर एक्सपेंसेस जहां हिथिबो सेटा हमें कोन करबा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो करबा debit side रे all revenue income relating to the current year with the receipt or accrued on the credit side सेमती एई वर्षर जहां भी खर्च आ जहां accrued थिबो ओके सब हमें क्रेडिट साइड रे इनकम रे रेकॉर्ड करबा तापर असला 5 पॉइंट रे all indirect expenses that is expenses relating to the administrative and selling go to profit and loss account जहां हम कहतली selling related जहां और administrative relating जहां expenses हबो हम सेटा हमरो डेबिट साइड रे शो करबा as indirect expenses तापर असला if income are more than the expenses it reveals net profit कहतली जदी इनकम्स मीन कोटे क्रेडिट साइड जदी अधिक होला हम रिवील्स को नेट प्रॉफिट डेबिट पट कमी जिवो तो नेट प्रॉफिट हमर होला which is added to the capital in the balance sheet सेटा कोन हबो हमें जेंति ट्रेडिंग रो ग्रॉस प्रॉफिट को आनले प्रॉफिट एंड लॉस जेंति प्रॉफिट एंड लॉस रो नेट प्रॉफिट की नेट लॉस रो इफेक्ट कोड पड़ो बैलेंस शीट रे ओके तो जेटा नेट प्रॉफिट हला तमे कैपिटल ले तको ऐड करिया बैलेंस शीट रो सिमिलरली इफ एक्सपेंसेस आर मोर देन द इनकम जदी डेबिट साइड अधिक होला डेबिट साइड कोन हम चाहे भी एक्सपेंसेस करछे सब रेकॉर्ड करछे तो डेबिट साइड अधिक होला तो हमें क्रेडिट साइड कमी गला हम कोन हिजो नेट लॉस एटी भारी सेमति नेट लॉस ले कोन कराबो कैपिटल डिडक्ट कर दबा जदी हम नेट प्रॉफिट हला कैपिटल ऐड करले आ एटी कोन होची नेट लॉस होची तो कैपिटल डिडक्ट करबा तापर असला नीड for preparing profit and loss account. The purpose for which profit and loss account is prepared are to calculate net profit or net loss. Okay, say it means the concept net profit बाहरिबो कि net loss बाहरिबो. The basic purpose of preparing profit and loss account is to find out the net result of a business during a year. गोटे वर्ष भितरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रो हमें केते नेट प्रॉफिट है केते लॉस है जानिया पे नेट रिजल्ट कोन गोटे अकाउंट पीरियड भितरे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनउचे a business perform various functions such as purchase sale and incurs various expenses during a year हमें गोटे बिजनेस करछु में जिंस किनुचे बिक्री करछे ट्रेडिंग पे आ एतरो हमें प्रॉफिट केंती अर्न कर पाइबा तो से ये कहूची सो it is but it is but natural obvious natural that the owner is interested to find out the operating result for which he prepare profit and loss account गोटे बिजनेस रे जदी गोटे लोकटा जे प्रोप्राइटर से बिजनेस रे किछि पैसा इन्वेस्ट करछि से भी तो चाहिबो ना नहीं वो बिजनेस रे लॉस होछि कि प्रॉफिट हो जाने पे चाहिबो तो केमती ए सब स्टेटमेंट बनला पर तो से कंफर्म हो कि मो केते प्रॉफिट होछि केते लॉस होछि कि मते को एरिया रे काम करबा दरकार ओके तापर असला टू कंपेयर परफॉर्मेंसेस देखो ए वर्ष मोर एती प्रॉफिट है आर वर्ष कोनटा को एरिया मते काम करले अधिक प्रॉफिट हबो कि मार्केट रे देखो कॉम्पिटिटिव बहुत बढ़ुची तो कॉम्पिटिटिव तो बढ़ुची तो गोटे लोक सहित आ गोटे लोक माने से लोकटा कोन होची तार एते प्रॉफिट होची मोर के होन तो सही से कंपेयर करे पे मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब बनाऊ the net profit of the current year is compared with net profit of the preceding year to find out whether the performance has improved or declined in case of decrease
decline. In case of decrease in net profit, management tries to analyze the reason of such decline and take corrective measure to improve upon it. Okay. ଯଦି ଆମର ଆର ବର୍ଷ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ନେଟ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ସହିତ ଏ ବର୍ଷ ନେଟ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଶେଇଲେ ଦେଖିଲେ ଆମର ଏ ବର୍ଷ କମ ଅଛି, ତ ଆମର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବ କଣ ପାଇଁ ଅଛି, କୋଉ ଏରିଆରେ ଆମର କଣ ଭୁଲ ହେଇଛି, କଣ ପାଇଁ ଆମର ନେଟ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଟା କମିଲା, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ନେସେସରି ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେବେ। ଓକେ, corrective measure to improve କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାହା ବି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଡିସିସନ ନେବେ କି ଆମେ କୋଉ ଏରିଆରେ କାମ କରିବା ଅଧିକ ଦରକାର, କୋଉଥିପାଇଁ ପଇସାଟା କମ ପାଇଁ ନେଟ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ କମ ପାଇଁ କମୁଛି, ସେମାନେ ସବୁ ଡିସିସନ ନେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କମ୍ପେୟାର କରିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଟୋଟାଲ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍। ତାପରେ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଆର ବର୍ଷ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ, ସେମ୍ ଜିନିଷ ବାହାରୁଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କଣ ପାଇଁ କରିବା, ଯୋଉ ଏରିଆରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଥିବ ଆମେ ସେ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ଟା କମେଇବା। ଓକେ, the administration and selling expenses of the current year are compared with that of the preceding year. ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ସହିତ ସେଟା ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା to find out if there is any negative variance for the ratio of administrative expenses to sale, administrative expenses to net profit, selling expenses to sales, etc. are worked out to exercise control over such expenses. Okay, ଏଇ ସବୁ expenses ରେ ଆମେ କୋଉଠି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦଉଛେ ସବୁକୁ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ଯୋଉଠି ଆମର କମ କମେଇ ପାରୁଥିବା କମେଇବା, କମେଇଲେ ତ ଭଲ ଆମକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଫିଟ୍ ହବ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା ଟୁ ଆକ୍ସେସ୍ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଟୁ ଆକ୍ସେସ୍ income tax. Okay, income tax is imposed by the government on the net income of a business. Unless profit and loss account is prepared, net profit cannot be ascertained and so tax cannot be calculated. Okay, हमें tax कहाँ पर दबा, हमारे तो net profit है ची, current year जितनी profit है ची, हम तो आप पर tax दबा, so सही tax टा କେତେବେଳେ ବାହାର କରିବ, ଆମେ net profit ବାହାର କରିବା, ସେତେବେଳେ ଦେଇପାରିବା, ସେତେବେଳେ calculate କରିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ profit and loss account ବନେଇବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଆସିଲା to prepare balance sheet. ଆମେ net profit ର amount କୁ ନେଇକି balance sheet ବନେଇବା, ଯାହା depreciation asset ରୁ କରିଥିବା ସେଇ ଅନୁସାରେ net profit ଟା transfer କଲା ପରେ balance sheet କୁ ଆମେ balance sheet prepare କରିବା। ତ first prepare balance sheet ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ ଦରକାର, net profit ଦରକାର। The net profit or loss is transferred to capital account in the balance sheet to find out the resultant capital of the owner at the end of the year. Okay, ଆମର ଯଦି net loss ହେଇଥିବ ତ ଆମେ capital minus କରିବା, ଯଦି net profit ହେଇଥିବ capital add କରିବା। at the end of year ରେ ଯୋଉ proprietor invest କରୁଛି ସେ ବି ଚାହୁଁଥିବ whether ତାର capital ଟା ଏବେ କେତେ ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ balance sheet ବନେଇବା। balance sheet ବନେଇବାକୁ ହେଲେ କଣ ହବ, ଆମେ net profit net loss ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। without the figure of net profit or loss, closing capital cannot be worked out. Okay, ଆମେ ତ ଯେତିକି ଥିଲା ଆର ବର୍ଷ ଯେତିକି ରହିଯିବ ନା, ଏ ବର୍ଷ କେତେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଛି କି ଲସ୍ ହେଇଛି ଜାଣିବା କେମିତି, ତ କଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନେଟ୍ ଫିଗର ଟା କେତେ ତାର ଅଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ବନଉଛେ। and hence balance sheet cannot be prepared, okay, without calculating the net loss or net profit we can draw balance sheet. now ଆସିଲା to plan for future। ଦେଖ ଆମର ଯଦି ଗ୍ରୋ କରୁଥିବ ବିଜନେସ ଟା, ତ ଆମେ ଚାହିଁବା ନା କାହିଁକି ଆମର ଆହୁରି ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରୁ ବିଜନେସ ଟା, ଯେତେ ବଢେଇ ପାରିବା ସେତେ ଆମର ପ୍ରଫିଟ୍ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଲା ଟୁ ପ୍ଲାନ୍ ଫର ଦ future planning such as expansion, ଏଠି କହିଲେ expand କେମିତି କରିବା, and diversification, ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବିଜନେସ ଟା ଅଛି ଆମେ ଚାହିଁବା ଆଉ ଦି ଚାରିଟା ଜାଗାରେ ଆମର ବିଜନେସ ଟା ହଉ। ଓକେ, ତ ବିଭିନ୍ନ ଡିଭିଜନରେ ଆମେ ବିଜନେସ ରଖିଲେ ଆମର ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହବ। ତ future planning such as expansion and diversification can be undertaken on the basis of the profit earned by the business. business ର profit କେତେ earn ହଉଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ କେତେଟା ୟୁନିଟ୍ ଖୋଲିଲେ ଆମକୁ ଯୋଉଟା ସୁବିଧା ହବ, ଆମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଡିସିଜନ ନବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଡାଇଭରସିଫିକେସନ କରିବା। such profit figure is provided by the profit and loss account. net profit profit and loss account ହିଁ କହିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦେଖିଲେ କଣ ଦେଖିଲେ ନା ଆମର କଣ ପାଇଁ କରୁଛେ, ଆମର ନେଟ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କରିବାର ମେନ୍ ପର୍ପୋଜ କଣ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆଇଟମ appearing on the debit side of profit and loss account। ଦେଖ ଯେମିତି ଆମେ ଟ୍ରେଡିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ କଲେ ଆମେ ତାର ଡେବିଟ୍ ପଟେ କିଛି ପକଉଥିଲେ, କ୍ରେଡିଟ୍ ପଟେ କିଛି ଆଇଟମ ପକଉଥିଲେ, ସେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ କିଛି ଆଇଟମ ପକଉଛେ, ଡେବିଟ୍ ରେ କିଛି କରୁଛେ, କ୍ରେଡିଟ୍ ପଟେ କିଛି ପକଉଛେ। ଡେବିଟ୍ ପଟେ ଯାହା ବି ସବୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ଅଛି ସେ ସବୁ ନଉଛେ। ଓକେ,
तो फास्ट आसला ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस कौन ना इफ ट्रेडिंग अकाउंट शोज ग्रॉस लॉस। आमे देखिले ग्रॉस लॉस टा हमर ट्रेडिंग अकाउंट रो राइट पट होतला बाय ग्रॉस लॉस दिखाउतला जेतेबेले आमे ट्रांसफर करिबा प्रॉफिट एंड लॉस को तो कोन करिया टू ग्रॉस लॉस करके डेबिट साइड रे मेंटेन करिबा। इफ ट्रेडिंग अकाउंट शोज ग्रॉस लॉस it is to be brought down to the debit side of profit and loss account as to gross loss. Okay, the gross profit case रे क्रेडिट पर लिखिया पाई ग्रॉस प्रॉफिट। ओके ग्रॉस लॉस है टू ग्रॉस लॉस। सेकंड रासला salary. It includes salary paid or payable to the employee working at office, warehouse and sales department. Okay, जहाँ पे हमें सैलरी दोचे सैलरी मेंटेन करिया और देखिए सैलरी पेड और पेबल ए वर्ष जहाँ पे हिची और पेबल हिची से सब हम बुक करिया। But salary paid to the owner or partner is not included in this but are to be recorded separately are to be debited separately. आमे जनरल सैलरी जो स्टाफ मान दियाउची सेथिरे जो ओनर और पार्टनर दियाउची सेही सैलरीटा इंक्लूड करबानी तांका पई आमे देखि देबा सैलरी टू ओनर की सैलरी टू पार्टनर पई अलगा उठे हेड करके रेकॉर्ड करिया डेबिट करिया प्रॉफिट एंड लॉस रे। If net salary is given after deduction of income tax and provident fund contribution, these are to be added to the net salary to find out gross salary, and the gross salary is debited to the profit and loss account. तो ଆମେ କଣ କରୁ ଦେଖିଥିବ ତ ଆମେ ସାଲାରୀ ପାଉଛେ ଆମର TDS କାଟି ଦଉଛନ୍ତି TDS କାଟିକି ଆମକୁ पेमेंट କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ डेबिट କରିବା ଆମେ फुल अमाउंट डेबिट କରିବା। ओके तापर आसला सैलरी एंड वेजेस। आमे ट्रेडिंग अकाउंट रे केमति पढ़थिले वेजेस और सैलरी पढ़थिले सेतरे कोन होतला हम कहउतले कि वेजेस रो परिमाणटा वेजेस रो भागटा अधिक आउ सैलरी कम तो वेजेस एंड सैलरी तेले वेजेस टा अधिक थिला आमे ट्रेडिंग नथले मजूरी एटी जेमति कहै सैलरी एंड वेजेस लिखा हिची मींस सैलरी रो भागटा अधिक आ वेजेस रो कम तो आमे कोन करिया एटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रे शो करबा। हियर सैलरी एंड वेजेस आर क्लब टुगेदर दुईटा को मिसी के अछि माने किछि पार्ट हमर सैलरी पे दिया अछि आ किछि पार्ट किछि पैसा हमर वेजेस में दिया अछि किंतु अधिक कहा पे दिया अछि सिंस द वर्ड salary is given first importance का होगा salary means it is assumed that salary constitute a major part and wages is negligible means salary पे जो पैसा टा देछि अधिक पैसा देछि wages पे अल्प तमे तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रे शो करब। ओके तो सैलरी एंड वेजेस देथिबो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रे नबो तो वेजेस एंड सैलरी देथिबो तो वेजेस रो स्टार्ट देथिबो एटा हमें नबा ट्रेडिंग अकाउंट रे। तापर आसिला discount allowed to customer for from payment being a revenue loss is debited to profit and loss account. Discount may also arise while discounting bill. देखो डिस्काउंट हम अलाउ करछे कस्टमर को अलाउ करछे जे हमको सेल हमर सेल्स कले हम तो कुछ डिस्काउंट देछे तो सेटा भी हम पे ଗୋଟେ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैला त हम एटा हमर कोपडे करबा डेबिट साइड रे शो करबा सेंते डिस्काउंट रिसीव तर करबा हमर क्रेडिट पट हम रिकॉर्ड करबा। तापर 5 रे असला रेंट रेट्स एंड टैक्सेस असला रेंट पेड फॉर द ऑफिस वेयरहाउस एंड सेल्स सेंटर्स एट रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ओके रेवेन्यू मींस कोन ऑलवेज चलथो जो एक्सपेंसेस करा हेतो इनकम होतबो रेवेन्यू नेचर जोरा नॉमिनल नेचर से सब मासर हमर दिया होची रेंट दिया होची तो सब को हबो revenue expenses तो indirect expenses similarly municipal taxes and rates are also indirect expenses all these are taken to the debit side of profit and loss account। okay interest paid or payable on borrowed money that is loan overdraft etc is an expenses which is debited to profit and loss account। आमे जहाँ भी इंटरेस्ट पे करछे आमे किछि बोरोइंग हमर अमाउंट अछि ओके जहाँ इंटरेस्ट दबार अछि कि देछि जोटा कि एई वर्ष रे आमे बुक करिया जेति कि हमर होछि सेटा आमे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेड करिया in order to find out true profit interest on capital provided by the owner is also charged to profit and loss account। देखो आमे जो बिजनेस टा करछि जे हमकु जे हमर प्रोफाइट अछि से किछि पैसा इन्वेस्ट करछि से जो पैसा ऊपर आम से बैंक रे नॉर्मल करथंदा तो बैंक रो किछि इंटरेस्ट मिलि थांदा तो एठी से बिजनेस रे पैसा इन्वेस्ट करछि तो ता कैपिटल ऊपर ता किछि इंटरेस्ट दबा दरकार तो सेटा भी से पाइबार योग्य हकदार
तो एटा भी इंटरेस्ट हम गोटे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट रे शो करबा। तापर असला रिपेयर्स एंड रिन्यूअल जहाँ भी रिपेयर मेंटेनेंस हमर एक्सपेंसेस होची बिल्डिंग रिपेयर हैला एटा गोटे कैपिटल नेचर हिजबो कि जहाँ भी अलग छोट छोट मोटे जिंस रिपेयर होची बिजनेस रे तो से सब हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रे शो करबा। Expenses incurred on repairs and renewals to keep the fixed asset in running condition is treated as indirect expenditure. Okay. It includes repairs of renewal of factory, plant, machinery, building. इस जहाँ भी सब हब repairs हब तापे हमें कौन करबा रिपेयर और मेंटेनेंस गोटे हेड करके सेतरा हमें सब एक्सपेंसेस करा डेबिट करबा। तापर असला डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ପାଇଁ ତମ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ଚैप्टर ଅଛି बस जानथो जदि गोटे एसेट टा किनछ तापर तमे डेप्रिसिएट कर न कले एबे जे देखो 10 वर्ष में एटा किनछ आज जति चलुची नेक्स्ट ईयर को तार टिकी कैपेसिटी टिकी कमी थिबो तो एटा 10 वर्ष भितर स्क्रैप हो तो सेही अनुसार हम तार वैल्यू टा को भी लाख टका किनछे तो वैल्यू टा को भी सेति रे कमेबा कारण 10 वर्ष पर से जीरो हो जिवो तो वर्ष को हम सेमती ताको किछि वैल्यू टा डेप्रिसिएट कर करी आसीबा। डेप्रिसिएशन देखो कोन लगा fall in the value of fixed asset is termed as depreciation which is debited to profit and loss account। तो हमें वैल्यू रे किछि किछि फॉल आनिबा कारण सेटा एफिशिएंटली नुआ रु जति पुराना हबो कम कम सेटा हम काम दबो आ गोटे मुहूर्त से तार स्क्रैप वैल्यू पर जीरो भी हेजिबो। ओके तो हमें ता करे सब वर्ष ता फिक्स एसेट को डेप्रिसिएट करिया तार वैल्यू को किछि किछि डेप्रिसिएट करिया किछि वैल्यू किछि फॉलिंग आनिबा। ओके if the rate of depreciation is given with the word per annum depreciation is calculated with regard to the period of use तो देखिबो केते depreciation परसेंट देथिबो 10% चार्ज करबो कि 15% चार्ज करबो per annum means गोटे अकाउंटिंग करे हम सेति चार्ज करबा। if the word per annum is missing depreciation is calculated without any regard to time period for example देखो जदी per annum दे नथिबो केति परसेंट हम होची तो से जितकी वर्ष पे हम तो किनपा तर लाइफ टाइम थिबो सेतरे डिवाइड करके ताका हम चार्ज करिया। फॉर एग्जांपल देखो इफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 10% ऑन द मशीन ऑफ 50000 50000 रे जदि हम 10% डेप्रिसिएशन करछे द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड एंड लॉस अकाउंट विल बी 5000 देखो 50000 10% केते हबो 5000 तो 10% 50000 10% 5000 हम कोडी डेबिट करबा मोर प्रॉफिट एंड लॉस रे लिखा बाय टू डेप्रिसिएशन 5000 तापर असला कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टेलीफोन एक्सपेंसेस इलेक्ट्रिसिटी पोस्टेज लीगल एक्सपेंसेस ऑडिट फी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी तापर आर एक्सपेंसेस incurred on administration and taken to the debit side of profit and loss account it is spelling mistake अछि म ताको करेक्ट कर देबी। तो जहाँ भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जहाँ भी रिलेटेड एमती ऑडिट फी हो कि प्रिंटिंग स्टेशनरी हो लीगल एक्सपेंसेस थला सेटा कोन करिया डेटा हमें प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करबा। ओके तापर असला सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विथ सेल सच एज एडवर्टाइजमेंट तापर सैलरी एक्सपेंसेस कैटरेज कमीशन ऑन सेल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर all indirect expenses and charged to profit and loss account। profit and loss account जहाँ भी selling और distribution sell करछे distribute करे पे भी हमर जहाँ भी expenses होची ओके से सब हमें profit and loss रे चार्ज करबा। ओके आज क्लास को एंड करबा नेक्स्ट क्लास रे आहुर कुछ आइटम अछि ताको करके प्रॉफिट एंड लॉस रो गोटे क्वेश्चन आंसर करबा तापर हम नेक्स्ट क्लास रे हमर बैलेंस शीट बुझिबा। ओके तो थैंक यू क्लास को एंड करबा।